लिखने से या लिखने से फॉर दैट मैटर, एंड वी हैव टू मेक इट एंजॉयबल. ओके, so let me begin the essay writing class by saying that generally people have a conception that it is just a big answer. It is not like that. जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हम ज्यादातर फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन एसेज जब भी लिखते हैं तो वो इशू बेस्ड होते हैं और उसमें ओपिनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्ट्रक्चरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंटेंट और कंटेक्स्ट के साथ साथ आपका एक राइटिंग स्टाइल भी होना चाहिए, तभी जाके ऐसे पढ़ने वाले को ऐसे पढ़ने का मजा आएगा. लिखने वाले के लिए ऐसे एक टीडियस टास्क इसलिए हो जाता है क्योंकि यू नीड टू इंश्योर द अटेंशन ऑफ द रीडर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. अब वो अटेंशन होल्ड करके रखना सबसे मुश्किल काम है ऐसे राइटिंग के अंदर. एक बार जब आपका ऐसे कोई पढ़ना शुरू करे तो एक लाइन से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन वो रुके नहीं जब तक वो खत्म नहीं कर लेता. अगर इस तरह का ऐसे लिख पाओगे तो दैट विल बी गुड इनफ. यूपीएससी के लिए वही चाहिए. हम यहाँ पे सिर्फ कुछ फैक्ट्स की प्रेजेंटेशन नहीं करते, कुछ रैंडम आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं उस तरह से नहीं लिखते. यहाँ लिखने के लिए बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसे राइटिंग को कंप्लीट करते हैं अपने आप में. तो उन एलिमेंट्स का ध्यान रखते हुए ऐसे राइटिंग करनी है. तो आज पहले लेक्चर में इन एलिमेंट्स की ही डिस्कशन करेंगे कि जब आपके सामने एस्से का क्वेश्चन आ जाए. यूपीएससी में आपको 2 सेक्शंस में ऐसे पूछते हैं, सेक्शन ए बी करके, 4 में से एक दोनों में आपको चॉइस मिलेगा. सो यू हैव टू राइट 2 essays and the time given to you is 3 hours. So generally people spend about half an hour in brainstorming and 1 hour in writing, because जो length of essay है वो 800 से 1000 word average length होती है और इतनी की expected है आपसे लिखना. अब ये वर्ड्स, इतने वर्ड्स लिखने में आपको टाइम ज्यादा नहीं चाहिए होता. 1 hour is more than sufficient. अगर आप आराम आराम से भी लिखेंगे तो 1 घंटे में लिख लेंगे. टाइम आपको चाहिए उनका स्ट्रक्चर बनाने में. जो पहला आधा घंटा है इसलिए हम हमेशा स्ट्रक्चर बनाने में लगाते हैं, जो क्वेश्चन है उसके एनालिसिस में लगाते हैं कि लिखे कैसे, ये डिसाइड करने में लगाते हैं. ठीक है. अगर मैं बेसिक ऐसे की बात करूं तो ऐसे को 3 एरियाज में डिवाइड किया जाता है. लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड टू एक्सप्लेन दिस. सो एनी essay, one of the very basic structures is you need to work upon the introduction, then there is a body and then there is a conclusion. अब ये तो आपको मालूम है, ये तो आप ऑलरेडी करते आए हो पता नहीं कितने सालों से कि ठीक है जी, एक इंट्रोडक्शन होती है, एक बॉडी होता है और एक कंक्लूजन होता है. अब एसेंशियली इसमें आपका दायित्व है क्या जब आप इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन लिख रहे हो? इंट्रोडक्शन में आप एसेंशियली ये बताते हो व्हाट एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट, है ना. सो व्हाट एम आई गोइंग टू टेल, दिस इज योर इंटेंट. What am I going to tell in this essay or in this answer like this? Okay. Then in the body you tell जो ऊपर आपने लिखा था कि हाँ मैं ये बताने वाला हूं, तो फिर वही बताओ. और कंक्लूजन में you basically end up by saying, or your intent is what I just told you. That's like a summary. Okay. What I just told you in the above essay. So this is the one of the very basic structures. This is called completing the circle. You know, जिस चीज से आप इंट्रोडक्शन में शुरू कर रहे थे वहीं पे आप खत्म कर रहे हो, और बाकी चीजें जो भी बीच में बात हो रही है वो भी कनेक्टेड है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वजह से जब भी कभी ऐसे लिखा जाए तो फ्लो के ऊपर, बिकॉज इट इज द मोस्ट बोरिंग थिंग टू रीड. सो यू नीड टू मेक इट इंटरेस्टिंग, यू नीड टू मेक इट फ्लूइड. द next line should connect some way to the one that you just read, so that there is a continuous momentum, at the time of reading. There are no abrupt beginnings, there are no abrupt endings. Okay, so wo nahi chahiye isme. It need not be a bumpy road. So it has to be fluid, it has to be smooth. एक से एक चीजें अपने आप इवॉल्व करती रहें. और इन सब चीजों के लिए ना आमतौर पे लोग ये सोच के चलते हैं कि the language of the essay has to be something like a jingoism. Need not be. It can be very simple. It can be very out there, very obvious for that matter. अगर आप जो भी लिख रहे हो
if it seems in reading कि अरे तो बड़ा ऑब्वियस था, पढ़ के आपको ऐसा लगे या रीडर को ऐसा लगे, इट इज वेरी ऑब्वियस, दैट्स द वे इट इज, और you provide a lot of clarity to a particular topic on the essay. That's what is exactly needed in an essay. जब वो आपको एक टॉपिक देते हैं तो essay के अंदर उनकी इंटेंशन ये होती है कि क्या आप एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाते हो, कैन यू मेक इट ऑब्वियस टू द रीडर who has minimal or probably no knowledge of that particular subject upon which you are writing. That has to be the beauty of your essay. It needs to be very obvious. आप अगर कुछ साइट करना चाहते हो तो उसको साइट करने का भी तरीका होता है, ठीक है? आप गलत सोर्स नहीं बता सकते, आप गलत फैक्ट्स नहीं बता सकते, और जो भी चीजें आप बोलो वो इतनी रैशनलाइज्ड होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क ना आए एक बार पढ़ने के बाद। क्योंकि जब हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मारते हैं फॉर एग्जांपल, या ओवर जनरलाइजेशन करते हैं, वो कुछ ट्रबल मेकर्स हैं ऐसे के साथ, ठीक है? सो नाउ स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे के क्वेश्चन आए और आप एक चॉइस ऑफ ऐसे कर लो, ठीक है, तो देन हाउ टू डील विद इट। तो फर्स्ट पार्ट इन अटेम्प्टिंग अ यूपीएससी essay is making a choice. यूपीएससी में ऐसे लिखने का सबसे बड़ी चुनौती ये है कौन सा ऐसे लिखें। 8 में से 2 लिखने, है ना? तो 4 में से 1 सेक्शन ए में, 4 में से 1 सेक्शन बी में। Now, how to make this choice? That's the most important and troubling part. There are certain myths about, essay writing choices. Myth number 1 is people feel that अगर मैं टफ टॉपिक पे, सीमिंगली टफ टॉपिक पे ऐसे लिखूंगा जो कि और शायद कोई नहीं लिखेगा, तो शायद मुझे ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, राइटिंग ऑन ए टफ टॉपिक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक और rare topic which less people will attempt, so that will fetch more marks. ऐसा कुछ नहीं है। सारी बात इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप क्या उस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकते हैं या नहीं लिखते टाइम। टॉपिक एज इट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड राइटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है। क्या आप जब उसको लिखेंगे, कैन यू डू जस्टिस विद दैट टॉपिक? दैट शुड बी द रीजन टू सिलेक्ट, ठीक है? सो इसका रीजन टू सिलेक्ट होना क्या चाहिए? कैन यू डू जस्टिस विद द टॉपिक? आपको उसके बारे में कुछ पता है? सिंपल, कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं आपके पास, कुछ ओपिनियंस ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं जो आप कैरी करते हैं। ये सब चीजें डिसाइड करने में हेल्पफुल होनी चाहिए, ना कि एक मिथ की हाँ सबसे टफ टॉपिक पे लिखूंगा। दूसरा, सेकंड बिगेस्ट मिथ, वर्ड लिमिट। अगर मैं बड़ा ऐसे लिखूं तो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे, पेजेस भरने के नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? नंबर ऑफ पेजेस is equal to number of marks. This is again a myth. Nothing like that actually exists. Okay? Reality is your essay has to be in the range of 800 to 1000 words. This word limit is already specified. No need to go more than that. A plus or minus of 10% is acceptable in UPSC. Whether you are writing an answer, whether you are writing an essay, it doesn't matter. Plus minus 10% चलेगा, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं, ठीक है? देन ये 2 मिथ्स सबसे बड़े मिथ्स हैं यूपीएससी के अंदर जब बच्चे कोई एस्से अटेम्प्ट करते हैं। आपका कोई इसके अलावा थर्ड मिथ है तो मुझे बताओ, फिर हम उसको बस्ट करें। ओके, चलिए। अब नाउ मेकिंग अ चॉइस में सब्जेक्ट
एक थर्ड मिथ ये भी आता है कभी कभी सुनने में, मिथ नंबर 3, कि एथिकल टॉपिक्स पे लिखने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे लिखने पे ज्यादा मार्क्स आएंगे, सोशल टॉपिक्स पे लिखते हो ज्यादा मार्क्स आते हैं, लाइक दिस, यू नो, nothing like that. Again, if you can do justice to a topic, you will get marks. If you cannot, you will not get marks. Myth number 3 is any other thing, any other prejudice or predisposition you have with respect to the set of topics presented to you, or anything like that, तो नहीं चाहिए. Okay. और predisposition की बजाय you need to cultivate upon your writing style. That is the reality. Okay. Style of writing the essay. इसके ऊपर वर्कआउट कर लोगे तो ऐसे राइटिंग अपने आप आसान हो जाएगी. ओके, नाउ व्हाट डू यू डू when the essay is presented to you? There is an essay question in front of you. What do you do? Okay, so do you want me to take an example of any previous essay for this? Should we? चलिए कोई भी एक नॉर्मल सा टॉपिक उठा लेते हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा सही रहेगा बजाय इसके कि हम यूपीएससी वाले कोई आपको अभी एकदम से उसमें डालें. ठीक है, सो लेट्स से कोई इन्वायरमेंट के ऊपर ले लो, एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट्स द की थिंग हियर. ओके, या इंटरनेट के ऊपर ले लो, कुछ भी. सो फर्स्ट टास्क, task number 1 while doing the essay is understanding the question. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. सुनने में बड़ा इजी लगता है कि ठीक है समझना है क्या लिखा है टॉपिक पहले, पर वो समझना कैसे है. सो लिखिए इसके बारे में. एवरी एसे टॉपिक हैज 3 कंपोनेंट्स. एवरी एसे टॉपिक या क्वेश्चन जो भी होगा उसके अंदर 3 बातें होती हैं. एज 3 कंपोनेंट्स. हमने आंसर राइटिंग के टाइम पे भी इसकी बात की थी, लेकिन अभी एसे के अंदर भी मैं इसको स्पेसिफिकली दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं. One is the directive. Okay. Second is the keyword. And third, क्या होता है? कौन बताएगा? Context. Okay. ये 3 कंपोनेंट हर ऐसे क्वेश्चन के अंदर होंगे. डायरेक्टिव को इंस्ट्रक्शन वर्ड भी बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस बेसिकली टेल्स यू व्हाट टू डू. What to do. That's the job. Okay. Keyword essentially, is the word which is indicating the topic. इसके बारे में लिखना है exactly. Word indicating the topic. And third, context is a sort of a restriction. हम कभी कभी there is a topic और उसका अगर सिर पैर ढूंढने लिखो तो एंडलेस है. जितना मर्जी एक टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो, किताब में लिख लो चाहे. मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 शब्द हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर लिखने बैठोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, cultural consequences, technological consequences, breakthroughs, study R&D into artificial intelligence, how it becomes a reality, the history of artificial intelligence. So many things are there. You cannot write about everything in a meaningful manner. You're not even expected to. So there has to be certain restriction upon your topic. That is contextualization. Context means हमने एक limited दायरे में रह के एक चीज के बारे में बात करनी. Infinite creation नहीं करनी. ठीक है. So these are the words restricting a topic. Restricting the topic. Okay. So that it remains meaningful. जब तक किसी चीज की बाउंड्री नहीं है ना, तब तक वो मीनिंगलेस रहता है. अभी जैसे माई स्किन इज माई बाउंड्री, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये अभिषेक सर है. अगर यहाँ पे स्किन ना हो और हार्ट इधर घूम रहा है, फेफड़े इधर घूम रहे हैं, तो फिर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ना. इट्स लाइक ओके सामने से फेफड़े आ रहे हैं, ऐसा नहीं. ठीक है. इफ देर इज अ स्किन, लेयर ऑफ स्किन, दैट इज द बाउंड्री, दैट क्रिएट्स द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. Similarly, there has to be a boundary that will create the identity of your essay. What kind of an essay is this?
So if you are going about telling facts and everything about everything with respect to the keyword, that will not create an essay. Then you are writing probably the encyclopedia around that word. We're not trying to write an encyclopedia or a dictionary. We're just trying to provide a thematic representation of whatever has been given to us in the question. And that theme or that context is the limited context. तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप का दायरा एक बांधना जरूरी है कि मैं इस दायरे में रहते हुए इसकी रिस्पेक्ट करते हुए ये ऐसे लिखूंगा. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट किया जाए तो इट इज द लिमिटेशन or limited boundary of an essay. Fine. So these are the three components of each and every essay topic. जब आप उसको पढ़ो तो आप ये तीन चीजें पहले ही बार में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. सोचो इनके ऊपर कम से कम 10 मिनट लगाने जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे आ जाए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न सोसाइटी. मैं डायरेक्टिव के ऊपर और इन सब चीजों पे बात करता हूँ कि कैसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल लिखिए, फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न सोसाइटी. हमारे पास ये टॉपिक आ गया. अब डायरेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब. कॉन्टेक्स्ट क्या है? मॉडर्न सोसाइटी, है ना. कीवर्ड क्या है? Role of internet. श्योर. Internet. Is it the role of internet or the internet or the role? इतनी छोटी Role. सी लाइन है, देखो. श्योर. Okay, anybody else would like to try with the certain amount of certainty, fixation? Keyword is role of internet only, so the emphasis is on role. Ultimately it is a phrase. Role अपने आप में तो किसी चीज का तो होगा ना. So role of internet in modern society. So this is the keyword, this is the directive, and this is the context. Modern society is the limitation that is created here. I don't need to talk about the role of internet in medieval society, the extra modern society, or post-modern society. I don't need to talk about postmodernism. Okay, I need to talk about the present. Fine. Now, when it's said describe, what is the meaning of this word describe? मैं एक दूसरा टॉपिक और लिखता हूं यहाँ पे, फिर आपको ये समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी. So the environment is the most important issue. The environment is the most important issue in the world today. In the world today. Discuss. अब इसमें डायरेक्टिव क्या है जी? जल्दी जल्दी बोलो. Discuss. Discuss. This is the directive. What's the keyword? What are you going to talk about in this essay? Environment. Okay. Sure. ठीक है. Environment. फिर context कौन सा है? Hello, hello. What is the context? जल्दी से. Manpreet, what is the context? Jaspreet, Sumedha. Okay. So, मुझे बताना पड़ेगा. Important issue in the world today.
This is the context. Most important issues or issue in the world today. ठीक है? So that is the context. Today's world. अभी मैं सिर्फ डायरेक्टिव को कंपेयर करता हूं. जो डिस्क्राइब का डायरेक्टिव है, इसका इंटेंट क्या है? इट नीड्स यू टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, not opinions. Discuss provides you the room to give you or to give more opinions rather than facts. Put it very simply. डिस्क्राइब में हमारी जो मंशा होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन वर्ड के हिसाब से, वो होनी चाहिए फैक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स डिस्क्राइब करना. लेट्स से यू आर डिस्क्राइबिंग मी एज अ पर्सन. सो डिस्क्राइबिंग मी एज अ पर्सन यू विल से 6 feet 2, जो भी आगे आगे आप बोलना चाहते हो, ब्लैक हेयर, ओके, और स्किन कलर, ऐसे. दैट इज डिस्क्रिप्शन. जब हम बोलते हैं डिस्कस, सो व्हेन यू डिस्कस मी एज अ पर्सन, at that point you will have your opinions about. Fine. Let's say describe China and discuss China. Now at that point of time, description is only facts, discussion is opinions also. There can be facts, but you can also provide your opinions. ज्यादातर एसेस जो होते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, वो आपसे एक पर्टिकुलर इवैल्यूएशन मांगते हैं. ठीक है? अब ये फैक्ट्स में भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, और ओपिनियंस को भी आप इवैल्यूएट या एनालाइज कर सकते हो. हाउ डज वन सेट ऑफ फैक्ट्स weigh against the other set of facts? For example, इंटरनेट से मॉडर्नाइजेशन में हेल्प हुआ है क्योंकि एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बढ़ाता है. लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेट से इनइक्वालिटी भी बढ़ी है क्योंकि डिजिटल डिवाइड भी इसी से क्रिएट होता है. इंटरनेट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी जॉब्स की रिप्लेसमेंट भी होगी. एम्प्लॉयमेंट जो है वो जैसे अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए मुश्किल भी है. So there are a set of facts, so you evaluate one set of facts against the other. That's how you do. समझ आया? That is described. When you discuss, at that point of time, you provide opinions. You need not give facts. You straight away give opinions, and you analyze the opinions on the basis of fairness of those opinions. Okay? So here is just a very simple way of talking about describe and discuss opinions. Okay? Fine. अब क्या करना होता है, नेक्स्ट आपका क्या इसमें एस्पेक्ट है? तो कीवर्ड वो है जिसके बारे में हमें एक्चुअल में बात करनी है सारे टॉपिक के अंदर. और जब भी कभी आपको कुछ एक चीज को लेट्स से एक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करनी है, तो कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करने का तात्पर्य ये होता है कि यू रिमेन लिमिटेड. ओके, फाइन. सो पहले कीवर्ड्स पे आते हैं. यूपीएससी ने जिन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस किया है, दे आर इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, जो आपके एसेस में बार बार आता है, साइंस, ओके, एथिक्स, देन रिलीजन, देन लॉ, देन वैल्यूज, morality, human rights, welfare, women, गांधी और गांधी जी. ये कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स या की एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बार बार यूपीएससी ऐसे पूछता है. ठीक है? इस तरह के कीवर्ड्स आपने अब आइडेंटिफाई करने. दैट्स द टास्क फॉर यू. ओके, अगर हम वर्कआउट करें कि जो एसए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनको हम इस तरह से वर्कआउट करने की कोशिश करें, यू नो, कि उसमें कीवर्ड है क्या. फाइन. सो दैट विल गिव अस दिस आइडिया ऑफ व्हाट यू नीड टू रियली फोकस अपॉन. जैसे मैं 2015 का एक एसे आपको दिखाता हूँ. लेट मी, is the first one that came up here.
leading someone hand, uh, is it visible to you, the question paper? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो लिखा है 1000 से 1200 वर्ड्स, ठीक है. लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल. किसी को अपना काम करने में हेल्प कर दो बजाय इसके कि तुम उसको कुछ फ्री में दे रहे हो या कुछ. क्विक बट स्टडी विंस द रेस. Character of an institution is reflected in its leader. Education without values, as useful as it is, seems rather to make a man more clever devil. अब ये सारे के सारे एसेज में कर क्या रहा है, एक प्रोवर्बियल टेक्निक उन्होंने यूज की है. सम और द अदर काइंड ऑफ अ proverb or a dictum kind of a thing is given to you, and then you need to work your way around it. Okay. Then technology cannot replace manpower. Crisis faced in India, moral or economic. Dreams which should not let India sleep. Can capitalism bring inclusive growth? अब ये सारे टॉपिक्स बड़े ही इधर उधर जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप इसमें ध्यान रखो. जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे भी ये चीजों का ध्यान रखना. लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल. किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है. मतलब मैं ही करके दे दूं उससे अच्छा है आपकी हेल्प करूं. दैट इज वन थिंग. इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, सोचो 2 मिनट के लिए. आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. अब आप इसमें एग्जाम्पल्स ही डाल पाओगे. इसने ये कर किया तो उसने उसकी हेल्प की तो फिर ये अच्छा हो गया, लाइक दिस. आया ना, राजा राम मोहन रॉय वांटेड टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती. विलियम बेंटिक हेल्प्ड हिम. दैट वाज बेटर rather than the British outrightly coming into the context. Okay, quick but steady wins the race. So sometimes it can be talked about in various contexts, reaction versus response, etc. But again, you are limited in your context. You may have more ideas, but the ideation on such things get limited. Character of an institution is reflected in its leader. यहां पे ना एक चीज नोटिस करो, इन चारों एसेस के अंदर कोई भी डायरेक्टिव नहीं है. अब मुझे जरा बताओ कि अगर मुझे डायरेक्टिव लेना हो अपने तौर पे तो वो क्या होगा? एनालाइज, सिंपली, है ना. कोई आउटराइट डायरेक्टिव नहीं दिया गया. कीवर्ड क्या है चारों में से? अगर आप कीवर्ड वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, व्हाट इज द कीवर्ड इन द फर्स्ट वन? lending hands to someone is better than giving a door. What is the keyword? इस तरह के जो फ्रेजोलॉजी है इसमें कीवर्ड ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. What is the context? Think of it. Technology cannot replace manpower. What is the context? And the UPSC goes one step beyond, the basic discussions. अभी और निकालते हैं, चलो ऐसे प्रीवियस ईयर्स के. ये कोई भी एक लिस्ट ले लीजिए. यूपीएससी वेबसाइट पे चलते हैं, भी बेटर. I had a list of all these essays preserved somewhere, so we'll use that list later on. Let's come back to this discussion. For the matter of discussion, let's get you prepared first. Okay, so like I said, education, etc., ये सारे topics होते हैं. तो आपको इसी तरह से मैं एक topics की list दे दूंगा आज. That will be covering the last 20-25 years में कितने क्या essay के अंदर क्या क्वेश्चन आए. ठीक है. अब आपको करना ये है कि उसमें से कीवर्ड्स ढूंढने. उसका फायदा आपके लिए क्या होगा? जब आप अलग अलग करंट अफेयर्स, आंसर्स, बेसिक टॉपिक्स कुछ भी पढ़ रहे होगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट विल हेल्प यू. आपका आइडिएशन के लिए, आपकी आइडिया कलेक्शन के लिए एक चीज बनती चली जाएगी कि हाँ ठीक है, एजुकेशन के ऊपर ऐसे आ सकता है, वैल्यूज के ऊपर ऐसे आ सकता है ना.
तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इन एन एसे राइटिंग सिचुएशन. ओके, सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट. कीवर्ड हमने बात कर लिया, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. तो कॉन्टेक्स्ट पे मैंने जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया, ट्राई टू फाइंड द बाउंड्रीज और लिमिटेशन. ऐसा नहीं है कि ऐसे आया मॉडर्न के ऊपर, जैसे हमने पीछे टॉपिक्स लिए थे इन मॉडर्न सोसाइटी, तो मैं सोसाइटी इन जनरल की बात नहीं कर सकता, मैं एंशियंट मिडिवल उसकी बात नहीं कर सकता, या पोस्ट मॉडर्न की बात नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है, बट ये मेरा फोकस एरिया नहीं है, ये मेरे को ऐसे में पूछा नहीं गया. मैं इनके बारे में एक लाइन लिख सकता हूं. कैसे? That internet has helped in the evolution of society from its ancient and medieval phases to the modern and postmodern phases. ऐसे कुछ लिख सकता हूं मैं, बट मेरा जो कोर एरिया ऑफ फोकस रहेगा वो यही मॉडर्न सोसाइटी ही रहेगा. ठीक है, तो आई कैन आइडेंटिफाई, एंड इट इज गुड टू आइडेंटिफाई द वास्ट स्कोप ऑफ द टॉपिक. लिखो अपने पास. जब भी कॉन्टेक्स्ट या बाउंड्री या लिमिटेशन हम लगाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे के अंदर एक लाइन ऐसी होनी चाहिए विच आइडेंटिफाइज द वास्ट और ब्रॉड स्कोप ऑफ द टॉपिक, बट देन लिमिट्स द सेम टू द ऐसे क्वेश्चन. जो आपसे अभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी तरफ उसको साथ के साथ ही लिमिटेड भी कर दे, ये भी जरूरी है. आइडेंटिफाई भी करना है कि हाँ इसमें ये सारी चीजें आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है, ये भी कर देना साथ के साथ. फिर बात यहां करनी. बात क्लियर हुई? कॉन्टेक्स्ट. हेलो हेलो. अदरवाइज ये हमेशा आपका ना मन करता रहेगा ऐसे लिखते हुए कि मैं थोड़ा सा इधर भी नजर मार लूं, थोड़ा सा इधर भी नजर मार लूं. वो उसके नंबर तो आने नहीं, इनफैक्ट आपका ऐसे कम्बरसम होता जाएगा. तो अच्छा है कि आप जब कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसके अंदर ही ये वाली बात क्लियर कर दें कि इस सब्जेक्ट का दायरा कितना बड़ा है और हमें इसमें क्या बात करनी है. कि फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ये हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस फार वी हैव addressed or identified three elements of the question. Now, how to analyze the question? This is the second area. Analyzing the question. कुछ भी टॉपिक आपको दिया जाए उसको कैसे एनालाइज करना होता है, तो लिखिए. इट मींस recognizing the focus of the question, recognizing the focus of the question, and knowing what approach you should take, what approach you should take on the topic or to the topic. Grammatically correct expression will be to the topic. Okay, तो यहां पे थोड़ी शांति रख के मन में ना, और ये थोड़ा सा वर्कआउट करो. ऐसे में वो देखना क्या चाहते हैं, अगर ये चीजें आपके दिमाग में हो तो फिर आप ये वाले दो पार्ट कर पाओगे. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दी फोकस एंड व्हाट अप्रोच यू शुड टेक. कैसे आंसर लिखना है किसी भी टॉपिक के लिए. ठीक है, सो हियर know what is expected of you or expectations of UPSC. फिर आप ये एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन ठीक से कर पाओगे. सो व्हाट डज द यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? उन्होंने सिलेबस में हर जगह पे क्लैरिफाई किया हुआ है ये चीज, तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ. ठीक है, सो
कैंडिडेट्स आर असेस्ड, जो उन्होंने एग्जैक्ट लिखी है ना चीजें वो पढ़ा, कैंडिडेट्स आर असेस्ड on their ability to first present the solution to a problem, present the solution to a problem. अगर आपके क्वेश्चन में कोई एक प्रॉब्लम है तो आप उसके कितने और कितने अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. दूसरा, present and justify an opinion, present and justify. ओपिनियन देना कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे. जस्टिफाई एन ओपिनियन अगर उसमें ओपिनियन देने की जरूरत है तो. थर्ड, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एविडेंस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एविडेंस, ओपिनियंस एंड इम्प्लीकेशंस. किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे पास अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. उनको आप कितने अच्छे तरीके से कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर पाओगे वो आपके मार्क्स क्रिएट करेगा. फोर्थ, इवैल्यूएट एंड चैलेंज आइडियाज, इवैल्यूएट एंड चैलेंज आइडियाज, एविडेंस और एन आर्ग्यूमेंट. कई बार ऐसे बोल देते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भाई इंडिया बहुत पीछे जा रहा है, अदरवाइज पॉवर्टी इंडिया में कम हो रही. You should be able to evaluate such kind of a report, even it is based upon evidential findings, fact findings. You should be able to challenge the facts that this limited amount of parameters upon which you are gathering facts that does not represent the entire complexity of the situation of poverty in India. Okay, so you are going for a limited data based upon your choice while creating a report that can present a one-sided figure. So if you have to make a true comparison of thing, you need to have more dimensions, and those dimensions need to be contextual as well. जैसे हम कई बार ऐसे जब भी कोई रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल लेवल की तो एक ये आर्ग्यूमेंट भी होता है कि भाई ये इंडिया की पिक्चर को ठीक तरीके से नहीं बता रहे. अगर इंडिया के पॉवर्टी के बारे में या गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में जानना है तो थोड़े और तरीके भी लगाने की जरूरत है. तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है. ओके, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है योर एबिलिटी टू यूज डेफिनेशंस, योर एबिलिटी टू यूज एग्जांपल्स, योर एबिलिटी टू क्रिएट अ फोकस इन द एसे, कि जब रीडर है तो क्या वो फोकस फाइंड कर सकता है या नहीं. ठीक है, नाउ these are the things upon which UPSC is going to judge you, provide you with marks. Now coming back to focus of the question, how to find the focus of the question. Okay, जो भी टॉपिक दिया है उसको अगर ध्यान से पढ़ें तो फोकस क्लियर हो जाता है. डायरेक्टिव्स के बेसिस पे या कीवर्ड के बेसिस पे यू विल बी एबल टू प्रोवाइड अ क्लैरिटी टू योरसेल्फ कि अच्छा ठीक है मुझे इस बारे में बात करनी है. ठीक है, मैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने रख रहा हूं और आप फिर मुझे बताना कि इसका फोकस है क्या. ठीक है, नॉट द कीवर्ड हियर, नाउ द थिंग इज फोकस. आई एम लुकिंग फॉर व्हाट शुड आई राइट अपॉन. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. So many people believe that internet is the most revolutionary new invention of the last century. Do you agree? Internet has revolutionized the modern world, but many people argue that it has also created new problems and inequalities. What is your opinion? The internet could revolutionize the world in future if everyone could have easy access to all the information that is available on the World Wide Web. Do you agree or disagree with this statement? Now, try and find what is the focus of this topic.
हाँ जी, तीनों के अंदर ना एक दो चीजें कॉमन है, इंटरनेट, 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 रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज, ये दो चीजें तीन टॉपिक्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो क्या ये मेरा फोकस है? बताइए। हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनाइज्ड? जब हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी तो मतलब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर एंड रिजल्ट के ऊपर देख रहे हैं। हम बोलते हैं रेवोल्यूशनाइज तो मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है, इट इज स्टिल अ थिंग विच इज अनफोल्डिंग, है ना? सो इट्स अ फिनोमेना, रेवोल्यूशनरी फिनोमेना, and this is a process or a phenomena, again it is working, and revolutionized already हो गया, कर दिया। It ultimately simply means fundamentally changed. revolutionary word का मतलब होता है fundamentally changed, कहने का मतलब it is not something as it was before. To revolutionize means that it has made certain fundamental changes. Okay, अब सब में ये दो वर्ड कॉमन होते हुए भी इन सब का फोकस अलग अलग है। तीनों क्वेश्चंस के अंदर फोकस है अलग अलग। पहले के अंदर फोकस है दैट इट इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी न्यू इन्वेंशन ऑफ द लास्ट सेंचुरी, दिस इज द फोकस है, इंटरनेट की ही बात हो रही। लेकिन पिछली एक सदी के अंदर, कौन सी सदी, 20th सेंचुरी, उसके अंदर ये सबसे रेवोल्यूशनरी नई इन्वेंशन है। पहले का फोकस ये है, दूसरे का फोकस क्या है? हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मॉडर्न वर्ल्ड बट हैज आल्सो क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटीज, है ना? अपने आप में इसने रेवोल्यूशनाइज तो किया है मॉडर्न वर्ल्ड को, लेकिन इट हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटीज। तो इंटरनेट की बात हो रही है लेकिन फोकस अलग है। तीसरा टॉपिक देखो, कुड रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड इन फ्यूचर if everyone could have easy access to all information that is available on the world wide web. So कर सकता है रेवोल्यूशनाइज, पॉसिबिलिटी है टू डू दैट अगर हर एक के पास एक्सेस हो तो। तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों इंटरनेट के बारे में, लेकिन तीनों का फोकस अलग अलग है। So this is the most important key aspect. Whenever you are trying to work upon it, the keyword is, despite that it is same, the focus or the contextualization is the concern. तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, मैंने इसमें बात क्या करनी है। It's very simple. Some of you already know it, and it seems very obvious, but it's very important at the same time. Now, when we say understanding the context or understanding this entire thing, तो उस टाइम पे भी ना कई बार चीजें पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक ही तो है, कुछ नहीं हो रहा, चल रहा है। जैसे अब यहाँ पे आपने फोकस तो ढूंढ लिया, व्हाट अप्रोच यू शुड टेक, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तीनों में अप्रोच भी तो अलग अलग होगी फोकस के हिसाब से। जब हम बोलते हैं मोस्ट रेवोल्यूशनरी न्यू इन्वेंशन ऑफ द लास्ट सेंचुरी, आवर अप्रोच विल बी, बताइए। द वर्ड ऑफ फोकस हियर इज मोस्ट रेवोल्यूशनरी। क्या कोई और ऐसा कुछ हुआ है क्या? मोस्ट रेवोल्यूशनरी न्यू इन्वेंशन, कोई और ऐसी न्यू इन्वेंशन भी हुई है क्या 20th सेंचुरी के अंदर? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? डोंट यू थिंक मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल्सो द मोस्ट रेवोल्यूशनरी? हेलो हेलो, Yes, sir. वो भी तो एक कंसर्न है। तो डू यू एग्री, दैट्स द थिंग। सो डू यू एग्री जब हम बोलते हैं ना, डायरेक्टिव में जब डू यू एग्री एग्रीमेंट की बात की थी, तो यू कैन कंप्लीटली एग्री, दैट इज वन अप्रोच। यू कैन पार्टली एग्री, or you can completely disagree. These are the three approaches that are available to you.
because in that question there is a statement being made. Towards that statement your agreement can be full, partial or not at all. लेकिन आपको उस एग्रीमेंट का अगर फुल है तो भी जस्टिफिकेशन देना है, एनालिसिस देना है, जैसा भी है, इनकम्प्लीट है तो उस तरह से एनालिसिस देना है. दैट्स व्हाट द एसे इज अबाउट. सो दैट इज द अप्रोच टू द टॉपिक. ठीक है. अभी यहां पे भी देखिए, internet has revolutionized the modern world, but people argue that it has also created new problems and inequalities. Now again, my concern is what is my approach? Argue. So there are various kind of arguments here. What side of the argument am I upon? Am I for the revolutionized modern world, or am I for the new problems and inequalities? I have to provide arguments on both sides, and then I have to create a balance. In my opinion, it has created more problems than solutions, or it has created more solutions than problems. That is the approach in the second topic. In the third topic, it could revolutionize the world in future if everyone has an or could have an easy access to all the information that is available. And when we say easy access, so there are also secrets, sometimes the government does not want to reveal. So transparency, right to information, these are also parts of this debate. Yeah, if everyone, so technology, affordability, all are parts of this particular debate or particular equation that will be deciding. So this is my approach. Yeah, because if everyone have an easy access or could have an easy access will be determined by these things. Fine. So me being able to agree or disagree with this statement has to depend upon certain parameters. है ना? चलो दूसरा पैरामीटर इसका ये भी है, क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन आने से रेवोल्यूशनाइज हो जाता है क्या? नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन आने से भी रेवोल्यूशनाइज नहीं हो जाता. Information is not a revolution. Do you agree or disagree? Shruti? Simply by knowing something, can you really revolutionize anything? No. No, you cannot. There has to be a will, there has to be an intent, a motivation. So that has to add on to your whatever information that you have. And then only probably there is a possibility of revolutionization if a lot of people join that revolution. Revolution is not a single person job. Ideation may be a single person job. So many people finding commitment to that revolution will revolutionize it. Okay. So agreement or disagreement, that's another approach. That's how you approach these kind of things. Clear? How to find a focus and what approach you should take. Yes, sir. ठीक है. So आपकी अप्रोच डिटरमिन करने वाले एरियाज कैसे आएंगे, उसके ऊपर भी इस तरह से वर्कआउट करना है. चलिए अब नेक्स्ट वर्कआउट पे चलते हैं विद इन दिस. अब हर चीज के अंदर ना, हर टॉपिक के अंदर देयर इज अनदर थिंग दैट यू विल हैव टू डू. विल हैव टू डिफाइन द वर्ड्स, डिफाइनिंग द टर्म. ओके, सो दैट्स द सेकंड और थर्ड की एरिया. जब आपने कीवर्ड और ये सब आइडेंटिफाई कर लिया, कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने अपनी फोकस ढूंढ लिया कि मुझे किस चीज पे ध्यान देना है सारे ऐसे के अंदर, आपने अपनी अप्रोच भी तय कर ली. ठीक है. नाउ द थर्ड key parameter to work upon is defining the terms. Defining the terms in the question. यहां आपकी डिक्शनरी नॉलेज आपकी हेल्प करेगी. You being able to define something is essentially you being educated or not about it, है ना. जैसे मैंने कहा revolutionize और revolutionary, ये दो वर्ड्स हैं. कहीं पे लिखा हो revolutionary
और कहीं पे लिखा हो रेवोल्यूशनाइज, तो क्या ये अलग अलग हैं या एक ही है? बताइए। तो रेवोल्यूशनरी में चल रहा है और रेवोल्यूशनाइज में हो चुका है। नहीं, रेवोल्यूशनाइज में भी अभी पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंट में चल रहा हो। मैंने डी नहीं लगाया ना इनमें। इट इज यस सेट टू रेवोल्यूशनाइज, है ना, ये भी तो लिख सकता हूं। इट हैज बीन रेवोल्यूशनरी, अब तो पास्ट हो गए। So I'm not talking about the tense, present tense, past tense. What is the difference between revolutionary and revolutionize? Anji? When we say something revolutionary, something has already been established as such. We have accepted that it is revolutionary worldwide. It has been stated as a truth. It is non-debatable beyond any reasonable doubt. समझ आ रहा है? Then we call it revolutionary. When we say revolutionize, then we are looking at the possibility. We are not looking at an assertion. We are not looking at a fact. We are looking at a possibility. All this is an accepted fact. This is the possibility of becoming a fact. Okay? Hello, hello. This is the process. It is not yet a finality. तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। जब आपको ये वाली समझ आनी शुरू हो जाएगी ना, तब आप ऐसे जब लिखोगे तो आपका स्टाइल राइटिंग अब बिल्कुल डिफरेंट होगा। तब आप ये बातें करोगे ऐसे लिखने में, ये सेंस आएगी विद द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। कोई इंग्लिश में महारत की बात नहीं है यहाँ पे। आप पंजाबी में लिख लो ऐसे, कौन रोक रहा है? लैंग्वेज ही है ना, जो आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो वो भी तो दिखानी है। ऐसे में कि ये हमारा दायित्व है कि हमें लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड दिखानी है। तो लैंग्वेज पे कमांड इस तरह से बनेगी विद टाइम। ठीक है? सो दैट्स द थिंग। मोर यू हैव योर लैंग्वेज कमांड, मोर यू कैन शोकेस। ओके, सो चलिए, ये धीरे धीरे आएगा। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, you being able to define things, yeah, because that takes certain amount of prowess in language. Then fourth part is presenting ideas. Now you have the basics. आपने selecting and presenting ideas, rather I should write it like this: selecting and presenting ideas. तो selecting and presenting ideas का first part तो क्या होता है? Finding ideas. तो आपने क्या करना है, जब आपको ऐसे का टॉपिक मिल जाए, सबसे पहले जो उस टॉपिक के साथ रिलेटेड रैंडम चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, 5 मिनट लगाने हैं और उन सबको पेन डाउन करना शुरू करना है। ठीक है? सो पेन डाउन दी रैंडम फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस, ओके, पंच लाइन्स, एक्सेट्रा ऑन दैट टॉपिक, रफ में। दिस ऑल इज रफ वर्क। ठीक है? आपने लिखना शुरू कर देना कि ठीक है, ये कुछ भी एक टॉपिक आ गया, मोरालिटी, एथिक्स, एक्सेट्रा, जो पढ़ रखा है उसके बारे में ना, जस्ट उसको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन हो जाए आपको कि ठीक है मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने जैसे डॉक्टर नहीं लिखते, स्क्रिबल करते हैं, तो वैसे एक बार स्क्रिबल कर लेना है उसको। डोंट ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट ऑन द फर्स्ट part itself. Just try to randomly put it there in 5 to 7 minutes. Whatever is coming into your mind, just put it there. Okay? Things will keep coming into your mind even when you're writing the essay. ऐसा नहीं है कि तब नहीं आएंगी, बट फिलहाल पहले 5-7 मिनट लगा के जो दिमाग में आते जा रहा है, ऐसे मत करो कि आप सोच रहे हो लिखोगे बाद में। नहीं, ऐसा नहीं। जो आ रहा है बस उसको लिखते जाओ। रैंडम थिंग्स इन योर माइंड अबाउट एनी टॉपिक,
मे बी इन्वायरमेंट है, तो जो दिमाग में लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, साइकिल्स आ रहे हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स दिमाग में आ रही है, जो भी आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है ना। सिर्फ अपने आप को इंडिकेशन देनी है, उतनी क्लैरिटी से लिख लो कि खुद को ही समझ आ जाए बस थोड़ी देर में, ठीक है, कि मैं क्या लिख रहा था. दैट इज द पार्ट ऑफ फाइंडिंग आइडियाज. ओके, एंड दिस विल टेक सम टाइम टू फाइंड आइडियाज, बिकॉज definitely these are going to be your creation later on. So this finding ideas, or what we call it brainstorming, is the step one. Okay, then after you're done the brainstorming, जैसे brainstorming करने का ना एक तरीका होता है. लेट्स से इंटरनेट की बात करते हैं, तो पहला जो आपने अभी टॉपिक देखा, इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, बट इट हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटीज. डू यू एग्री? दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो इंटरनेट को लेके जरा बताओ क्या क्या चीजें दिमाग में आती हैं. हाँ जी, मैं टॉपिक दोबारा लिख रहा हूँ. इंटरनेट बड़ा रेवोल्यूशनरी है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर. इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, बट इट हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटीज. डू यू एग्री? दैट इज द टॉपिक. ओके, अब इस टॉपिक के ऊपर लेट मी ब्रिंग दैट टॉपिक अगेन हियर. अब इस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो जरा. आप इंटरनेट को कैसे कैसे यूज करते हो? दिमाग में क्या आ रहा है? 5 मिनट लगाओ जरा फटाफट, बोलते जाओ जो जो दिमाग में आ रहा है जिसके. टर्न ऑन योर माइक्स, स्टार्ट स्पीकिंग, लेट्स हियर इट आउट. यू हैव टू बी इंटरैक्टिव, फिर लिख पाओगे. गो ऑन श्रुति. एजुकेशन, सोशल मीडिया, हम्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज. श्योर, चलते जाओ. व्हाई स्टॉप? रिलेशंस तमन्ना, विद हिस्ट्री. सुमेधा, एवरीबॉडी हैज फ्रीडम. अपने अपने माइक ऑन बैंकिंग करो, बोलो. सेक्टर. लेट देयर बी अ राइट, बोलो जिसके दिमाग में जो आ रहा है. बैंकिंग. ओके, इंटरनेट बैंकिंग, फाइन. Security of data, go on. Data governance, data protection, blah blah blah. E-commerce, online shopping, pornography, business communications, information research, computer virus, information sharing, email, social media, ticket booking, distance education, hacking. बोलते जाओ इस तरह से. ये है रैंडम आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग. आगे सारे रैंडम आइडियाज, ठीक है. अब जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, तो उस टाइम पे ये नहीं ध्यान देना क्वालिटी ऑफ आइडिया का, क्वांटिटी ऑफ आइडिया पे ज्यादा ध्यान देना. ओके, व्हाट द बेसिक आइडिया. ये आपका टास्क है. अब जब भी कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा टॉपिक आपके सामने आता है, जस्ट ट्राई एंड डू दैट. अब उसमें जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, आफ्टर पुटिंग ऑल दीज आइडियाज, यू नो, नाउ वी नीड टू create a certain sequence of these ideas. You need to select ideas as per the topic. तो अगर मुझे इसी चीज के ऊपर कुछ सिलेक्टिव आइडियाज लेने हो, तो 15 चीजें, 100 चीजें मेरे दिमाग में ही, उनमें से मैं अंडरलाइन कर लूं कि अब मुझे क्या इसमें से चाहिए. ठीक है, सारे नहीं लिखने. ध्यान रहे कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो देयर वाज अ फ्रीडम. या सो द सेकंड पॉइंट इज सिलेक्टिंग द आइडियाज as per context. कुछ आइडियाज मैं यूज करूंगा, बाकी नहीं करूंगा. थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज. ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जब मैं किसी से कोई बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरी कुछ सीक्वेंस तो होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, है ना. कौन सी चीज मैं पहले करूंगा, कौन सी बाद में करूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं वो सीक्वेंस नहीं ला पा रहा, तो फिर तो मेरी कम्युनिकेशन इधर उधर जाएगी, है ना. एंड आई शुड, फॉर दिस पर्पस ऑल्सो, फॉर ऑर्गेनाइजिंग देम, आई शुड क्लासिफाई माई आइडियाज, विच आर पॉजिटिव, विच आर नेगेटिव, विच आर
useful, which are useless, which are modern, which are ancient, which are social, which are political, which are economic. इस तरह से कुछ एक क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज अगर मैं कर पाऊं तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करेंगे. तो विद इन ऑर्गेनाइजिंग दी आइडियाज, जो रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं ऐसे लिखते टाइम, तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज. क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज. अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है. आप जो भी जनरल स्टडीज में पढ़ रहे हो वो तीन चीजों से रिलेटेड है. ध्यान से सुनना. पीपल, प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस. बस. चौथी कोई चीज ही नहीं है जिस जो आप जीएस में पढ़ रहे हो. कैन यू चैलेंज द स्टेटमेंट? सारी जिंदगी जो तुम पढ़ते आए हो वो इन तीन चीजों से ही कनेक्टेड है. पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. आज तक आपने जिंदगी में चौथी चीज पढ़ी ही नहीं एक्चुअल में. कैन यू गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड से एनीथिंग एल्स? ट्राई. Isn't it marvelous? हम आज तक जिंदगी में सिर्फ तीन ही चीजें पढ़ रहे हैं. पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. हेलो हेलो. If you're studying rain or monsoon, what is that? It's a process. How are people affected by the monsoon is also what you're studying in terms of agriculture, industry and services and whatnot, geographically also. And there are certain institutions that deal with monsoon. There is International Meteorological Association, India में Indian Meteorological Department है ना. Global warming is a process. Independence struggle is a process. There are certain people in that process. Even if you're studying about something as technical as an atomic bomb, you're studying about fusion and fission process. So beyond this three things, we don't study anything. So when you classify your ideas, you will be able to classify them like this in these three: people, process, institutions. There is another way in which these things are then further subdivided. Those ways are social, political, economic, cultural, international, national, subnational. These are the levels of ideation. Subnational. Okay. Historic or historical. Ethical. Moral. That's that. Okay. So these are the various levels of ideation. Levels of ideation. जब हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ लेवल्स ऑफ आइडिएशन है. ओके. इन्हीं लेवल्स ऑफ आइडिएशन के बीच में हमारी सारी चीजें चल रही हैं. पीपल आर सोशल. We have studied about social people, social workers, social religious reformers. Have we studied about them in history? Yes. We will be, yes, otherwise. And there is a social process. And there are social institutions. There are political people. There are political processes.
and there are political institutions. There are economic people, the businessmen. There are economic processes, production, distribution, consumption, and exchange, and there are economic institutions. There are cultural people, tribes, etc., ethnicity. There are cultural processes, religion, and there are cultural institutions, temples, theater. There are international people, international processes, and international institutions like this. Fine? Hello, hello. This will Yes. provide the classification to your ideas. Or if you keep this table in front of you and put any topic in front of this table now. Here's the topic. ठीक है? अब जरा इस टॉपिक को अपने सामने रखते हुए अब सोचना शुरू करो. Internet has revolutionized the modern world, but it has also created new problems and inequalities. So there is a statement and there is an anti-statement. There is a thesis statement and there is an antithesis. It has done this, but it has also done this. इस तरह का नेचर है ना क्वेश्चन का, है ना? और बात इंटरनेट की हो रही है. अब मुझे ये एंटी थीसिस और थीसिस जो है ना, ये इन सब डायमेंशंस पे अगर मैं सोचना शुरू करूंगा तो मुझे बड़े सारे मिलते हैं. मॉडर्न वर्ल्ड एक कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास. अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल, नेशनल, एक्सेट्रा, राइट? सो at the social level, how has internet revolutionized things and what problems and inequalities it has created? At the political level, how has internet revolutionized things and what problems and inequalities it has created? एक तो इस तरह से आप सोचना शुरू कर दो, methodical. At the economic level, how has internet revolutionized things and what problems and inequalities it has created? ये तो हो गया. अब now, how has it revolutionized things at the level of people, at the level of process, at the level of institutions, and what problems and inequalities it has created? सोचना शुरू करो, तुम्हारे पास इतना कंटेंट हो जाएगा तुम लिख नहीं पाओगे. एक एग्जांपल देता हूं. At the social level, okay, in terms of people, internet has brought people closer. It has dissolved the geographical barriers. Yes. But at the same point of time, it has isolated people more with the social media than to connect with each other at the physical level. तो मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट दी और एक एंटी थीसिस भी साथ के साथ दे दिया. प्रोसेस के लेवल पे बात करता हूं. Internet has helped in the people-to-people relationships or socialization process and thereby helped in human welfare and human well-being by helping people understand each other's problems, coming to each other's helps at the time of disaster management, COVID-19, for example, yeah, making people more aware of the various solutions, technologies, etc., being available elsewhere in the world and trying to adapt that towards themselves. But at the same time, it has also created certain social cleavages when we look at increasing use of internet for communal violence or spreading anti-social messages. So there is a statement and there is an antithesis also. At the level of institutions, so with the growth of internet, the social institutions have found a new audience and a broader acceptance, and at the same time gained strength. For example, the institution of marriage, the institution of family, the institution of panchayat, the institution of anything. But at the same time, the same internet creates troubles with people's marriage when people go to pornography, people go to online dating sites, etc., etc. It ruins the same social institutions of family when people become isolated by the extra use of internet and etc., etc., on
instead of family time. So it's just that at the social level you talked on three perspectives: people, process, institutions. अभी आपने सिर्फ एक बात की सोशल, अब इसी तरह से पॉलिटिकल, इसी तरह से इकोनॉमिक. पॉलिटिकल लेवल पे पीपल की बात करोगे तो इट हैज हेल्प्ड पॉलिटिशियंस कनेक्ट विद द पीपल, बट एट द सेम टाइम हैज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द those politicians and people, since not everyone is presently available on the internet. There is a digital divide. Not everyone knows how to use the internet. So if even in the era of e-governance, so to speak, people are not really able to connect with the governance. सुना है ना e-governance? तो ठीक है. Hello. Shruti, Sumedha. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Fine. So this is the way you can start thinking about an essay. Fine. This is classification of your ideas. तो अगर आप इस तरह से चाहे तो ये मॉडल सामने रख के फिर आइडियाज लेने शुरू कर दो, तो आपके आइडियाज भी थोड़े से इवॉल्व आएंगे सामने, है ना. तो ये आप अपने आप कंसोलिडेट कर लोगे धीरे 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 धीरे. चीजें आपके दिमाग में एक सिस्टमैटिक तरीके से आएंगी, और उनको सिस्टमैटिकली फिर एक बार आपके पास आइडियाज आ गए, फिर क्या काम रह गया? प्रेजेंटेशन ऑफ दोस आइडियाज. यस और नो? यहां तक की जर्नी जो है आइडिएशन वाली, ये आमतौर पे ना बड़ी अजीब सी जर्नी बन जाती है आम लोगों के लिए, क्योंकि वो सही तरीके से आइडियाज जनरेट नहीं कर पाते, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते. क्योंकि जब एक बहुत ज्यादा रैंडम पूल आपके पास इकट्ठा हो जाए, फिर उसको बांधना मुश्किल है. अगर आपके पास पहले ही एक स्केल अवेलेबल हो जिसके बेसिस पे आइडियाज जनरेट करे दिमाग, तो ज्यादा ठीक रहता है. माई अप्रोच हैज बीन दिस. जनरली द सजेस्टेड अप्रोच बाय मेनी सो कॉल्ड टीचर्स, दैट इज कि आप आइडियाज लाइन दो, बस आने दो आइडियाज जैसे आ रहे हैं. बुक्स में भी यही लिखा है. जितनी ऐसे राइटिंग पे आपको किताबें मिलेंगी ना, वो बोलेंगे आन दो आइडियाज, बाद में क्लासिफाई करो. मैं कहता हूँ एक स्केल बना लो, उसके हिसाब से आइडियाज आएंगे, थोड़े मेच्योर आएंगे, फिट करने भी आसान रहेंगे, पहले से दिमाग उसी लेवल पे चल रहा होगा. ओके. अब इसमें there are certain things that you need to be careful about while you come to presentation of ideas. That is the fifth, I think that's the sequence we are going about, presentation of ideas. Now, what things you need to be really careful about while you are presenting your ideas? And I'll conclude my lecture after this section today. Okay. Now, presentation of ideas may, there is one thing that you really need to be worried about is prioritization. जब मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज लिख रहा हूं, क्या पहले आए क्या बाद में आए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए तय करना. अगर आप अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में पहले बात करेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा ये बंदे को प्रायोरिटाइजेशन के बारे में नहीं मालूम. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पहले बात कीजिए. हाउ टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, जो प्रेजेंट या इमीडिएट फ्यूचर में रेलेवेंट हो, पहले उसकी बात करो. फिर एंशिएंट मिडिवल में जाओ, अगर कोई एप्लीकेशन की चीज है. अगर किसी चीज की समझ ही नहीं आ सकती बिना उसके पास्ट की बात किए, तो फिर आप हिस्ट्री की बात करो, फिर वो प्रायोरिटाइजेशन. ठीक है. अगर एक टॉपिक बड़ा सेल्फ एविडेंट टॉपिक है, देन टॉक अबाउट द प्रेजेंट, टॉक अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर, बट नॉट अबाउट द पास्ट, हाउ इट हैज इवॉल्व्ड. उधर मत घुसो ज्यादा. वो आप बाद में बात कर सकते हो जब आप उस टॉपिक की एनालिसिस करें. लेकिन अगर कोई टॉपिक सेल्फ एविडेंट नहीं है, बड़ा सही तरीका है अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का. मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूं और मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि इस बंदे को इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं मालूम, एबीसी. ठीक है. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिल बीन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस नेम स्टिल बीन? लेट्स से इसके ऊपर ऐसे आ गया. How many of you have heard this word still being? Nobody? Hello, hello. नहीं ना, नहीं सुना. बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे अभी तक. Stilbene is a chemical compound.
ट्रांस स्टिल्बीन, सिस स्टिल्बीन, इस तरह से आती है. इट इज ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल इथिलीन एक्चुअली. ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यूजिंग दिस वर्ड, बट इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी, किसी बंदे को शायद फ्यूजन के बारे में नहीं पता, फिशन के बारे में नहीं पता. तो इट इज very important that I first provide the definition or evolution of that topic. In that case, if it is not a self-evident or common knowledge topic. अगर तो वो कॉमन नॉलेज का टॉपिक है, मैरिज एंड डिवोर्स, ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिकिंग, है ना, फिर तो मुझे उसकी एवोल्यूशन डेफिनेशन की देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो एक डिफिकल्ट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्जांपल, नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड, है ना, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में एक डेफिनेशन या एवोल्यूशनरी स्टैंस देना है पहले. और अगर वो सेल्फ एविडेंट है, कॉमन नॉलेज का टॉपिक है, तो फिर मुझे प्रेजेंट की बात करनी है. मुझे उसकी हिस्ट्री को एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, एक डायमेंशन यूज करना है, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. तो प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर हैज टू बी माय प्रायोरिटी. ओके, इमीडिएट फ्यूचर, नथिंग एल्स. मुझे बहुत ज्यादा उसके पास्ट में डेल्व नहीं करना. So this is one way of prioritization. Other way of prioritization can be the amount of data that you have on a topic. कई बार जब पता ही नहीं है ज्यादा चीजें, तो फिर क्या ही करोगे ना. Okay. Now the next thing is generalization. When people write an essay, you know, हमें essay में क्या करना होता है, जनरलाइजेशन करनी होती है डेफिनेटली. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए. In an essay, certain amount of generalization is essential. मुझे लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस. इट इज जनरलाइजेशन. इट्स नॉट अ फैक्ट in every situation, but it's a generalization. But to what extent I do agree with this particular statement? It can buy temporary happiness. That's also happiness. है ना? So, देखिए, generalizations are necessary in an essay. However, one cannot make overgeneralization. One cannot make overgeneralization or sweeping statements or sweeping statements. To draw sensible conclusions about anything, to draw sensible conclusions, the word sensible is important. समझ आ रहा है मेरी 5 सेंसेस के थ्रू, मुझे एक्स्ट्रा सेंसेस ना चाहिए उसको समझने के लिए. ठीक है, टू ड्रॉ सेंसिबल कंक्लूजन्स अबाउट एनीथिंग विदाउट जनरलाइजिंग इज डिफिकल्ट. तो हमें कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा. बट sweeping generalizations do not help our argument or analysis. Sweeping generalization मतलब बिना सिर पैर की generalization do not help our argument. For example, 3 statements देता हूं और आप बताना कि क्या ये मैं ओवर जनरलाइज कर गया या ठीक है. ठीक है, एवरीबडी यूजेस द इंटरनेट नाउअडेज. अगर इस तरह की स्टेटमेंट पेपर में यूज हो, तो क्या ये जनरलाइजेशन है या ओवर जनरलाइजेशन है? फटाफट बोलो. ओवर जनरलाइजेशन. ओवर जनरलाइजेशन है, because not everybody uses internet these days. Okay, no one can run a business without IT. Really? एग्जामिनर को पढ़ते ही ये दिमाग में आएगा ना, इज इट सो? है ना?
any business can be successful if it uses modern information technology. दिमाग में एक डाउट नहीं क्रिएट होता स्टेटमेंट पढ़ के समझदार आदमी के? तो ये वाली स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं, और ये ओवर जनरलाइजेशंस आती कहां से? विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ऑल। इस तरह के वर्ड्स यूज करते टाइम बहुत ध्यान रखना है यूपीएससी में। एवरीवन, नो वन, एनीवन, बहुत ध्यान से, या तो करने ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल, everyone is contextual. Today I have certain ability, tomorrow may or may not be. Yes or no? That's the concern that with which we need to work towards. So be very careful about over generalizations and generalizations. ठीक है? इसी तरह की कुछ एक रीजनेबल इवैल्यूएशंस जो है ना, वो बड़ी मुश्किल होती हैं क्रिएट करनी अपने आप में। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स देता हूँ, देन here there are certain statements, then you tell me whether they are reasonable or not. Can I say so reasonably? Television has a terrible effect on young minds. Is it? My young ones reads poems like anything जब टीवी पे चल रही होती हैं, उसको इतने अच्छे से grabbed हैं वो. So it does not have a terrible effect on young minds. It can have a good effect also, because although it is passive learning, but that does not mean it will always be bad. The destruction of our environment is the most serious issue we face, because without enough clean air and water, we cannot live. अभी वाली स्टेटमेंट ठीक है? क्या मैं ऐसे में लिख सकता हूं? So you need to put a mark. क्या ये स्टेटमेंट रीजनेबल है या नहीं है? ये तो रीजनेबल नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट रीजनेबल है? दूसरी वाली, हाँ जी। The destruction of our environment is the most serious issue we face, because without enough clean air and water, we cannot live. Reasonable can be written. Then, unless government strictly controls the use of internet, world terrorism will destroy us all. Is it reasonable? Strictly controlled, destroy us all. Many of us are not even on internet. And government cannot strictly control the internet, whatever way the government tries to. So it is again unreasonable. Examinations can lead to high level of stress and even suicide in students. Is it reasonable? Shruti? Yes. Yes. Industry causes most pollution and therefore needs to be made responsible for preventing it. No. What else causes most pollution? Agriculture. Agriculture, vehicles. But they are also coming from industry only. No? This is a reasonable statement. Improved public transport is a much better solution to traffic problems than building more roads. Reasonable. Reasonable. If the government provides better public transport, there will be no more traffic congestions in our cities. Reasonable. Unreasonable. Traffic congestion is happening because of number of vehicles on the road. It's a behavioral issue. There may be a lot of public transport, but then people have to be using it also. Yes, no? So seemingly reasonable, but not so much. People who claim that nuclear energy is clean are ignoring the dangers of nuclear accidents. Radiation is not clean. Reasonable?
Yes, there is a threat of radiation leakage, etc. Fukushima disaster, Chernobyl, we all know that. So ये एक जजमेंट आपको कॉल लेना पड़ेगा हर टाइम, क्योंकि things which are seemingly reasonable and are unreasonable, they need to be talked about very clearly in an essay. ठीक है? So now the next and the most crucial part is, trying to build an essay writing style. तो अभी आपने यहाँ तक क्या है कि आइडियाज निकाल लिए, आइडियाज का कंपैरिजन कर लिया, उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, सीक्वेंस कर लिया. अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है, दैट इज द स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल कम विद प्रैक्टिस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी समथिंग दैट यू कल्टिवेट. टॉपिक टू टॉपिक भी थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग. इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा. अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए काम दूंगा पहले. ठीक है? स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग में क्या है, जैसे अ पर्सन कैन गिव अ थीसिस स्टेटमेंट एंड देन एंटी थीसिस स्टेटमेंट. जैसे यहाँ पे बात की गई थी ना, इंटरनेट ने बड़ा अच्छा कर दिया लेकिन साथ में ये ट्रबल हुई. दैट इज थीसिस एंटी थीसिस. दैट इज वन स्टाइल ऑफ राइटिंग. सेकंड स्टाइल ऑफ राइटिंग द एसे इज कॉज एंड इफेक्ट. Cause and effect. This has led to this. Third style of writing the essay is question and answer. Trying to raise the question, can internet really make a difference in a modern society? Is it the individual's behavior that will be more decisive? Is it the poverty level? Is it the technology? Is it the social integration that will be more decisive factor, or the internet by itself? This is the question, and then in the next sentence you give the answer. That's another way or style of essay writing, question and answer. Okay. Then there is a fourth way, fact and value. So you state a fact and then showcase how well this fact is within itself, or does it really need support of certain values to be able to withstand any kind of analysis, opinions, challenges. So there can be an evidence, there can be a fact, but really without the values or the support of values, can that fact really stand by itself? Or what are the values that you will need to inculcate in this fact to be able to stand by itself? That is a fact value way of writing. Okay. Then there are many others, but these are the four things that we will practice first in tomorrow's class. Thesis, antithesis, cause and effect, question and answer technique, fact and value techniques. अब आपका काम क्या है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े होते हैं एसे राइटिंग के ऊपर, और उनको जरा देखना शुरू कीजिए. मीनवाइल मैं आपको एक डिटेल्ड लिस्ट भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसमें वो ऐसे टॉपिक्स होंगे. ठीक है? सो राइट अवे वो आपके पास लिस्ट आ जाएगी. तो क्या किस तरह के एसेज हैं, उसमें से आपने कीवर्ड्स पिक करने हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर ध्यान रखना है कि जब भी आप आगे पढ़ रहे हो कुछ चीजें, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इस साल के लिए, तो उन चीजों को ध्यान से देखते रहिए अपने नोट्स में, अपने करंट अफेयर्स में, उसके बारे में उस तरह का एक फैक्ट मैटर अपने पास इकट्ठा करते रहिए. फिर राइटिंग स्टाइल के थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा लिखना कैसे होता है. ठीक है? फिर कल हम राइटिंग स्टाइल डिस्कस करके फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे एक एक करके. फाइन? गुड सो फार? एनी डाउट्स? लिख ली सारी चीजें आई होप, जो हम डिस्कस कर रहे थे? यस सर. चलिए, गुड. थैंक यू देन.